And Shivansh, thank you for the camera. Thank you, Shivansh. I would just request other team members as well to please switch on your cameras. Okay. Uh, sure, sir. So maybe we can start with the session. ठीक I है. mean, while students are The joining. presentation is up. You can Yes, see sir. it. Yes, sir. Yes, sir. It is, sir. Okay, great. So here we are, a very good afternoon, uh, middle of summers and towards the end of your semester. So I know final exams are hovering on the horizon. So extra thanks for making time. I know the last week, 10 days can be really, really crazy for exams. But I also think it's important that you consider what you're doing to be of value to you and importance to you for you to take the time out to continue with the discussions we've had. So some of you may or may not have been there last two sessions, almost 2 weeks ago, but great conversations. I know some of you are building really interesting, at this point, ideas which have a potential to become great ventures. And this entire program has been designed so that we can support you in all ways we can, from tech to product to marketing, so that not only do you launch a startup, but you make it, convert it into a long lasting venture. And one of the reasons behind this program by NASCOM Foundation is look at startups that have a social impact. So not only do you change lives in terms of economics, but you also change life in terms of quality of life, for example, or societies and communities. So glad to be here again. We will continue with our discussions, of course. Today, we're going to talk a lot about revenue models, competition modes. We will talk a little bit about go to market as well. As has been in the last in few instances, please pick up, ask questions, talk. You want us to repeat things, we're more than happy to do it. You can use chat, but I would prefer that you turn the mic on. If your camera is not on, that's even great. But if you can't, turn the mic on, ask your question, give your comment. I will certainly be asking you a lot of questions. So please, if you can give us your undivided attention for the next couple of hours or so, it'll be great. But before we jump in, I want to do a little recap. I think it'll help us all recalibrate. To some of us who may not have been there in the last couple of sessions, we'll get a quick sense of what we covered. And do you remember I brought some friends with me in the last session who were helping me talk to you? Do you remember that? There were some friends I had. No? Yes, sir, millions. Thank you. Who was that? By the way, I can't see your names anymore on the screen. So who was that? Yes, go ahead. Okay, Yash, thank you. So I've got the friends back so they can help us summarize some of the conversations we had last time. So we discussed at length that while startups are doing so amazingly well around the world, a high percentage of startups don't work out. Why? What are some of the reasons? Do you remember? Anyone? Even if you weren't there last week, why do you think so many startups don't work out? So multiple reasons like Okay, let's hear a couple of reasons. wrong timing Wrong timing is good. and like competitors के comparison में थोड़ा मतलब जैसे No, competition में sustain नहीं कर पाना. correct. You're not distinct or differentiated in the market. Huh? Yeah. Correct. Good points. Thank you, Shivansh. What else? Other thoughts? Shivansh, आप थे last week? Last week? Yes, sir. Okay. Okay, some other The thoughts? product does not fit in the market. Not Yash ने क्या बोला? The product doesn't fit in the market. What does that mean, Yash? Can you explain? Doesn't fit in the So market का मतलब क्या हुआ? sir, like the product which we are building, we will think that it will fit, but the majority of the audience don't want it. Correct. Correct. And that actually is correct. And what you said earlier was also right. We discussed many reasons why startups don't work out.
it could be product differentiation, it could be cash flow. हम लोगों ने बात की थी founders के बीच में भी misalignment हो जाती है. But the number one reason, year after year, we see startups not working on particularly technology-based startups, is that they are developing a solution, they're developing a product, but not sure what real problem are they solving. Is there a real need, जो आपने बोला? Will somebody say thank you for creating the next app and pay you for it, or creating the next mobile phone, or creating the next drone, or solving, creating some new curriculum to be used in government schools to improve education through tech? Whatever you do, if it adds, if it's not adding value, if it's not solving a problem, you will have a tough time convincing people why it's great and why they should come with you. So you're right. Many issues, but this stands out. We also discussed this term. Do not boil the ocean. What does that mean? So do not target everything. Okay, excellent point. Can you expand on that a little bit? So like if we are aiming to build something, uh, so it can be like for a specific segment first. If we go to target everyone at the same time, then startup won't work out. Very nice. A good answer, Shivansh. So while we may think we're solving the problems of billions and billions of people on the planet, you're a startup. You're way too small. People don't know you. So day one, if you try to focus on billions, it will actually overwhelm you in terms of segment. In fact, we discussed when there were presentations in the previous session, there was one startup that was developing robots to do a lot of things. You remember? From washing dishes to doing clothes to doing floors. And one of the conversations we had was, I think you're asking too much from your robot. Because you have to build it, you have to build an AI engine in it, you have to train it. Perhaps you should train it to do one kind of tasks before you do the other. So while the ambition should be large, and it's okay to be large, start small and build it in pieces. So can you boil the ocean? What is the answer? Can you boil the ocean? No, sir. What if I say it's yes? No, it's a So trick it can question. be, but Huh? in like not at the beginning. Perfect. No trick question. Can you boil the ocean? Yes, one glass at a time. So as a startup, keep this in mind, especially as you start developing products. ये शायद हमने explicitly बात नहीं की हो, but I think I need to sensitize you on this, given that this is an early stage program. You are at the ideation stage. What are we saying here? Nobody funds ideas? Is that what you're saying? क्या आइडियाज को पैसे नहीं मिलते हैं क्या? आपको क्या लगता है? Investors fund on the founders, their execution plan, and how they will make the idea to a product. And more than a product. From the product, they'll make a business out of it. Business out of it, yes. Correct. बिल्कुल सही है. So do investors fund ideas? Yes. Less, but they do fund ideas. And when they fund ideas, they're also putting money on the founder to say कि ये बंदा कर देगा. Or बंदी, depending on who it is, he or she will get it done. The idea is good, the problem is big, he or she is committed. I think he or she will convert it into a very strong, powerful business. That confidence one gets, right? I was sharing my background, technologist, I've been an entrepreneur. Today, I'm a mentor and angel investor. So when I put money in early stage companies, this is the filter I have, really. My number one filter is who's the person. If the person sounds strong, knowledgeable, won't give up, mission solid है, vision अच्छी है, yeah, possibly better to put money on the person now. Of course, if you have been doing something, if your startup is 1, 2, 3, 4 years old, then I would not just put money on you, I will also put money on how well you execute it. तो अगर आपने 4 साल में 20% growth rate assume किया है या 4 साल में आप 200% ले आए हो, matters.
Since we're talking so much about creating something for the right audience, addressing the needs, and all of you are engineering students here. So obviously some solution, some product is in your head, right? Software hai, hardware hai, combination, it doesn't matter. So when you think of a product, how do you know what should you ask yourself to make sure what you're building is right? Okay, Shivansh, you've been very good, but I want to invite others now. When you build any product, app hai, robot hai, doesn't matter what it is. What should that product have? दो तीन चीजें बताइए. Which are design decisions for you? Sir, vision. Okay, vision meaning what? मतलब उस product की क्या vision है? Like the founder must have the vision how he or she should build the product Okay, and how it will be work for the people. okay, good points. Thank you, Yash. Some more thoughts, please. How should you design a product? A lot of technologies get into technical designing. Wireframing करने लग जाओगे, prototyping करने लग जाओगे, feature list बनाने लग जाओगे, technology stack करने लग जाओगे. Natural है, but there's more to it. Okay, I'll tell you 3 fundamental questions you must ask. जो I think शिवांश आपने शुरू में बोला था. How distinctive, मतलब हटके क्या है उसमें? Think about it. हम सब कंज्यूमर थे, राइट? हम Amazon जाते हैं, टी शर्ट खरीदने, मोबाइल खरीदने, फोन खरीदने, मोबाइल खरीदने, पेन खरीदने. अगर हमें 10 चीजें कैसी दिखती हैं, तो सो आई डोंट नो हाउ टू बाय. व्हाई शुड बाय नंबर 2? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? क्वालिटी है, प्राइस है, लुक है, कलर है, जो भी है. हाउ डिस्टिंक्टिव, नॉट डिस्टिंक्टिव जस्ट लुक गुड, बट हाउ रियली इज इट better? You have to answer. 2, we've heard the term UX. UI UX सुना है हमने? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा मुझे what it means? तो चलिए, somebody who hasn't spoken. UI UX क्या होता है बताएंगे? So to design the user experience. So UI is what? And what is UX? Are they the same? So UI is more focused on the user interface, and UX is more about how the user experience has been while interacting with the product. Okay. Well stated. Can you give an example and explain that, Ashwin? Let's say take a mobile phone and can you explain that? Let's say on one hand we have an iPhone, on the other hand we have a Sony phone, Sony devices which are now outdated. Nobody has them. So we can say that they had a very bad interface, they had a very bad UI, or it was not just on par as compared to the iPhones. Okay. And that was one of the reasons for them being outdated. ठीक है. Difficult था to navigate करना, icons clear नहीं थे. Okay, so that's UI. तो UX क्या हुआ उसमें? Because of the bad UI, the user experience बहुत खराब हुआ उसकी वजह से. Especially for the older generations. और बताइए, what kind of thing will में मोबाइल फोन है जिससे एक्सपीरियंस खराब मिलता है? ऐसी क्या चीजें होती हैं? सोचिए जरा. बहुत बड़ा है, बैटरी कम है, रिचार्ज टाइम ज्यादा है, राइट? लो रेजोल्यूशन है, कैमरा क्लेम करते हैं 64 है, व्हाटएवर इट्स नॉट. तो यूजर एक्सपीरियंस में फंक्शनैलिटी भी आती है. सो व्हेन यू थिंक ऑफ अ प्रोडक्ट, think of how it will work in the hands of your user. How will it look? UI. And how will they interact and how will it do what it's supposed to do? कुछ भी, चाहे वो रोबोट है या ऐप है, जो भी है. And very important, how will it make the customer feel? आपने एप्पल का एग्जांपल लिया. एप्पल में not only you feel अरे it's smooth, the operation is nice, but there's a little bit of prestige also in that, right? Social prestige भी. अरे मेरे पास आईफोन है. Benefits and usage should be also be discussed. So the reason I'm flagging it to this engineering community is we often spend far too much time talking about features and technology stack and not enough about UX. Maybe a little about UI we do, but not enough on UX and benefits. And simple example, this is a real startup, which actually the problem they're solving is
they find a lot of school students are having mental wellness issues. And because of it, so many things they're not able to do. Of course, not being able to perform in school is one of those. So they've created a platform that connects young adults with certified credential therapists who specialize in dealing with young adults. So they're building something that's unique in the way peer support is provided, how anonymity is maintained. They've partnered with the institute so you can use the services. You don't have to pay for it. The institute pays for it maybe. So there are steps to register and whatnot. And of course, benefit is you get support, you get somebody to listen to, somebody to guide you in full confidentiality and privacy. तो अगर आप देखेंगे इसमें कहीं टेक स्टैक की बात नहीं हुई है. I'm not saying that's not important, but you have to think outside in first. You have to first think like a user or a customer who will use it, because if you do that, you will be ahead of your competition. Okay, let's look at a couple of things. ये आजकल थोड़ा कम हो गया, I'll be honest. जब earlier 2-3 years ago, when I would look at pitch decks for funding, right, as an angel investor, and आपने कुछ भी बनाया, app है, mobile है, पूरा what, it doesn't matter. About half the founders will say, "Oh, this is a beautiful part. This is great." And I would say, "Okay, so who's your competition? Who are you better than somebody?" And most of them, at least 50%, would say, "We don't have any competition." Why? Because of the way they define competition. आप बताइए, how do you define competition? Who's competition? किसको आप competition बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं. सर जो हाँ बोलिए. सिमिलर डोमेन में कुछ वर्क कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन एक्सटेंड टू आवर प्रोडक्ट आल्सो, सो दैट कैन बी आवर कंपटीशन. नॉट जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट बना रहे हो, बट डोमेन भी सेम होती है. तो गुड पॉइंट. So often सर्विस sorry, go ahead. तो सर्विस अच्छी दे रहे हैं, चीपर दे रहे हैं, वो भी तो Correct. कॉम्पिटिटिव है ना वो सर. भी कंपटीशन है, वो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपका बेटर एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ठीक है. इट्स नॉट जस्ट प्रोडक्ट, इट इज द एक्सपीरियंस. तो पॉइंट बहुत अच्छा आपका. जरूरी नहीं एग्जैक्ट सेम चीज एंड एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंस हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है एंड होता है लाइफ में. सिंपल एग्जांपल लेते हैं. नेम सम कंपेटिटर्स फॉर दिस बिस्लरी बॉटल. एक्वाफिना, एक्वाफिना और किनले, बिल्कुल सही है. बेली, तो बेली भी अच्छी ओके, बॉटल. बिल्कुल ठीक है. बेली भी अच्छी बनाते हैं पानी, ठीक है. Sir, I guess Himalaya. हिमालय भी अच्छा. बनाता है, बिल्कुल ठीक है. आपने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला. But there's other kinds of competitors also. सोचो जरा. सो जो वो डुप्लीकेट ब्रांड्स आते हैं बिस्लरी के. चलो डुप्लीकेट मान लिए, लोकल ब्रांड भी मान लिए, पर पानी ही बेच रहे हैं ना. मैं आपको बोलता हूँ कि जो कुछ लोग हैं जो पानी नहीं बेचते, बट देयर आल्सो कंपेटिटर्स टू बिस्लरी. जो आपने नाम बोले अभी तक, जो भी पानी बेच रहा है, चाहे छोटी बोतल है, बड़ी बोतल है, सस्ती बोतल है, महंगी, जब पानी है, वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है. दे आर सेलिंग द सेम सोल्यूशन. बट देयर आर सम इनडायरेक्ट. हाँ, कौन होंगे सोचिए. Sir, सर जो Sprite. I'm not एडिशनल sure. मिनरल्स करके स्प्राइट, कोक, जैसे- बिल्कुल ठीक बोला आपने. सॉरी, आप बोल रहे. हाँ बोलिए. सर आई वाज सेइंग लाइक जैसे जो एडिशनल मिनरल्स करके बेचते हैं, लाइक जो हायर सेगमेंट्स में बेचते हैं, बिल्कुल जैसे ठीक है, ब्लैक वाटर भी आया था अभी. बिल्कुल ठीक है. सो फोर्टिफाइड वाटर मिनरल डाल के एटसेट्रा से, बिल्कुल सही है. किसी Vedika. व्हाट डज वेदिका डू? Sir, it's also a brand, if I'm not wrong. बट वाटर की डू सेल एनीथिंग Yeah. एल्स? Water. नो, आई एग्री विद यू. देयर आर डायरेक्ट कंपेटिटर्स वन वे और अनदर. मैं हिंट दे रहा हूँ. थिंक ऑफ कंपेटिटर्स हु डोंट सेल वाटर. Anybody who sell competitive- beverages. Think about it. Think about it. Anyone who sells beverages. अब ये अलग बात है. Scientifically, if you have a can of Coke, it will make you thirstier. But most people say, प्यास लगी है, या पानी लेना है या कोक लेनी है. In their mind, it's equivalent. Similarly, you don't have to drink Bisleri, you can drink घर का पानी, RO water. It's a competition. So think about it.
when तो लोकल वेंडर जो कोकोनट वाटर बेचते हैं वो भी तो हाँ कंपटीशन में आ बिल्कुल गए। कॉम्पिटिटर है 100%, बिल्कुल ठीक बोला आपने। पर हम फर्स्ट लुक में नहीं सोच रहे थे ना, हमको कस्टमर के व्यू से देखना है। बिकॉज सिंपल बात करते हैं, बिस्लरी बॉटल ऑफ बिस्लरी सॉल्व व्हाट प्रॉब्लम फॉर द कस्टमर, सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम, So travel. Thirst. थर्स्ट नंबर वन, ट्रैवल ईज वगैरह, नंबर वन थर्स्ट। इफ प्रॉब्लम इज थर्स्ट, can't there be 10 solutions? पानी is one of the solutions, no? तो देखिए अगर आप, सॉरी गो अहेड, पीने लायक पानी, फ्रेश पीने लायक पानी सर। फ्रेश पीने लायक पानी, आप नलके का पानी भी पी सकते हैं, हैंडपंप भी, हैंडपंप भी कंपटीशन है आपका। रूरल एरिया में nobody buys बिस्लरी because they're comfortable buying hand pump. We don't do it. We don't drink from the tap, we do RO. So folks, the point I'm making is you can look at competitors from the point of your product, थोड़ा narrow हो जाएगा। I suggest look at it from your customer's point of view. Customer क्या problem का solution ढूंढ रहा है, जिसकी वजह से वो या आपके पास जाएगा या किसी ABCD के पास जाएगा। It's a very powerful concept. It requires you to mentally step out and see from the other side. एक और एग्जांपल लेते हैं। You know Healthify Me? Anyone? यस सर, ऐप है, Yes, sir. स्मार्ट है। Yes, sir. क्या करती है ये ऐप, क्या करती है? The steps, That helps you heartbeat, losing the weight. food suggestions, ये सब। वेरी गुड। तो इनके कंपेटिटर्स बताइए कौन है? Healthify Me के कंपेटिटर्स कौन है? The gym, Culfit is good. exercise, थैंक यू। अब आपको थोड़ा पुश कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट मत सोचिए, इनडायरेक्ट भी सोचिए। एक्सरसाइज इज अ कंपेटिटर। gym, सॉरी, gym. जिम, वेरी गुड। हु सेड दैट? यश, वेरी गुड, you're on the right track now. तो आप अगर आप Healthify Me है, in your mind you should not just say अरे मैं फिटर या कल्ट फिट से कैसे अच्छा हूं। I have to make sure people don't go to the gym and they come to me. I have to make sure people don't buy that watch, smart watch which is measured, but they come to me and take on my app. Their competition is far greater. डायरेक्ट के साथ प्रोडक्ट बेस्ड कंपटीशन है, इनडायरेक्ट के साथ सोल्यूशन बेस्ड कंपटीशन है। तो वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। When you look at what you're doing, solution you're making, product or service, please look for direct as well as indirect competitors. So traditional yoga systems with a competition हुआ ना सर? बिल्कुल हुआ, I agree with you. बिल्कुल हुआ। Because वो तो सबसे पुराना योगा सिस्टम है जिसको बीट करके इस ऐप को निकलना होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। मैं कहता हूँ पर्सनल, आपकी पर्सनल मोटिवेशन टू एक्सरसाइज इज कंपटीशन। If you're so motivated, so committed, you're a fitness freak, honestly, you don't need an app. You don't need a new app. आपके Google will track it for you, right? All the basics that you need. Your Android will track it. Okay. Thank you. The more the cameras are on, the better we feel. So thank you, Smriti. Any other comment or question on competition of the two kinds we're talking about? Sir, I have one question. Yeah. Sir, how Healthify Me become successful in like this competition? Like why someone would go to the app for their fitness? Okay. Good point. Excellent question. And let me generalize it. Why would somebody go to anything new? No, there are always direct and indirect competitors. We are saying 3, 4 only chances are there 20 other people. Why do people go to a particular, let's say, product in this case compared to others? आप बताइए सब लोग. Why do you choose brand A over brand B? जूते हो, bags हो, clothes हो, कुछ भी हो, watch हो. Sir, quality Quality, and price. price. So लोगों को जुबान पे उसका reach और taste. Sorry, taste of? Taste and reach on the tongue of people. बिल्कुल ठीक है। किसी को जैसे सूट नेबर करता है, आके किसी को बोला कि एडिडास का जूता ले लो भाई, ये अच्छा है, या स्पाइकर का ले लो, वो अच्छा है। And since they are our neighbors from old times, so we trust them without testing Correct. around. Correct. So it's called social validation. बिल्कुल सही बोला Yes, आपने। exactly.
कुछ हम ब्रांडिंग के लेते हैं, यार ये लोगो अच्छा लग गया मेरी टी शर्ट पे ले लेता हूँ, डबल है टी शर्ट का प्राइस, डजंट मैटर, वो मेरी Yes, वाइब sir. है, Brand name. या ब्रांड नेम भी है. सो देयर मेनी रीजंस. द इम्पोर्टेंट थिंग इज, अगर आप हेल्थीफाई मी हैं या आप बिस्लरी हैं, यू हैव टू से what is it in the mind of a customer, इसको branding भी बोलते हैं, what message can I convey to them to say that my value proposition जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं position different है, और you cannot be different on 10 different things. आपको एक या दो different points ढूंढने पड़ेंगे. सस्ता हूँ, बड़ा हूँ, मीठा हूँ, कड़वा हूँ, अफोर्डेबल हूँ, स्मॉल टाइम में अवेलेबल है, कलर रेंज ज्यादा है, वट एवर इट इज. आपने टर्म सुनी यूएसपी? यश, क्योंकि क्वेश्चन आपने पूछा था. Yes, sir. Unique selling Yes. proposition. तो आपको सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ. आप सब लोग, मेजॉरिटी ऑफ यू एटलीस्ट, विल अपीयर फॉर जॉब इंटरव्यूज, राइट? 1 2 3 4 सामने, राइट, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर. अब सोचिए, आपके सारे पीयर्स आपके साथ हैं, ऑल ऑफ यू अप्लाई फॉर द सेम जॉब, campus placement, and the person comes or the team comes to interview, they're going to do 30 interviews in that one day, same log ho, how do you stand out? What do you do? What do you need to do to stand out? आप बताइए. Mm, so work harder. हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग इज, उस दिन कुछ नहीं कर सकते. अगर आपने 7 सेमेस्टर कुछ नहीं किया, आपने, आपके ग्रेड लो हैं, तो फाइनल में आके कुछ नहीं कर पाओगे. आपके ग्रेड तो दिखेंगे सबको. Agreed. Mm, What else can you do on that day? What can you do to stand out? mm, Hint, So लोग to करते pitch हैं. myself in a हाँ, unique correct. perspective. Pitch yourself in a unique perspective. Dress smartly, stand out, talk Dress well, look confidently, sharp. look sharp, talk confidently. You know, most every interviewer will ask you, "Acha, tell me about yourself." And most students में गुम हो जाते हैं. They don't know what to say. So if you can create a little bit of an interesting story about who you are, not of 10 minute की story, 1 minute की story, 30 seconds की story, in the minds of the interviewer you're standing out. हाँ, थोड़ा different है. Grades तो सबके बराबर है. They're probably out of 30, they probably talk to 10 people who are 3.8 on 4. Grade बराबर है. अरे, ये थोड़ा entrepreneurial था. He tried to do a startup, चला नहीं चला, but it actually will help you. तो यश, मैं थोड़ा लंबा आंसर दे रहा हूँ. किसी भी चीज में, चाहे प्रोडक्ट और सर्विस हो, स्टार्टअप हो, या आप खुद हैं, you have to understand who else you're competing with and what are those 1 or 2 things you can do to stand out. Again, don't boil the ocean. Don't try to do everything different about you, or don't try to work so hard that you become non-authentic. Be yourself, but sharpen 1 or 2 things. It'll apply to Healthify Me, it'll apply to anything else. yes, sir. तो इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं. Let's assume that you are launching a new app-based cab service in India. Already हैं बहुत सारे? Already है ना ये? Yes, sir. देखिए, आपके direct competitors कौन है? If you're a brand, if you're launching a new Uber, who's your direct competitor? Ola, Rapido. Correct, Rapido. I'm glad Rapido, although indirect है, two-wheeler वाला है ना Rapido, हाँ, but it's a good No, no, sir. competition. Rapido also offers a Ah. cab service. Very good. Indirect में देखिए, आपकी काली पीली टैक्सी भी है, मेट्रो भी है, बस भी है, पर्सनल कार्स भी है. There's so much, no? How do you ऑटो stand भी है out? सर. ऑटो भी है. बहुत बढ़िया आपने बोला. सर तो यश, आप तमिलनाडु में तो ऑटो चलने ही नहीं देता सर. ओला उबर. करेक्ट, करेक्ट. वो यूनियनबाजी अलग है इशू. तो यस सर. हाउ डू यू स्टैंड आउट? अगर आप ये सर्विस है, तो यश, आप ही का क्वेश्चन मैं लेके जा रहा हूँ आगे. इफ यू आर लॉन्चिंग अ न्यू सर्विस, यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट हाउ आर यू गोइंग टू बी डिफरेंट. अगर आप बाकियों जैसी हो जाओगे तो कस्टमर कंफ्यूज रहेगा. कंफ्यूज्ड कस्टमर, बाय द वे, कभी नई चीज नहीं ट्राई करेगा. अगर ऊबर करा, ऊबर ही चलता रहेगा, अगर उसको नहीं पता कि आप क्यों बेटर हो. The important thing first, ये example लेते हैं. You have to see from the point of view of the customer what is important.
What does a customer care for when they book a app-based cab? ड्राइवर कैसा है, गाड़ी कैसी है, हाँ प्राइस क्या होगा, और ये सेफ है कि नहीं, क्लीनलीनेस कैसी होगी. देखिए, तो दिस स्टार्टअप, अगेन दिस इज अ रियल स्टार्टअप, उन्होंने कहा चलो पहले उबर को एनालाइज करते हैं. तो उबर में देखिए कुछ प्लसेस भी हैं, कुछ माइनस भी हैं, दिख रहा है आपको? एसेट लाइट, व्हाट डज दैट मीन फॉर उबर? डज उबर ओन द कार्स? तो डिपेंडेंसी नहीं है कार्स पे. But who owns the cars? Who owns the cabs? ड्राइवर्स. Are the drivers employed by Uber? Yes. Somehow. No. They work on contract basis. No. Asset light. ना उनके employees हैं ड्राइवर, ना उनकी गाड़ियां हैं. कितना बढ़िया मॉडल है. हेडेक नहीं, उनके हेडेक्स कम हैं, मतलब नहीं है, but कम है. एसेट लाइट है उनका. Mostly, and they're all over the world, mostly petrol based. some electric अभी शुरू किया है, and raise billions of dollars. But if I were to ask you, what are the common issues most customers are facing with Uber these days? क्या बोलोगे आप? आपको, are you happy with Uber? So ड्राइवर फोन करके पूछता है कहाँ जाना है, फिर कैंसिल. हाँ, फिर कैंसिल कर देता है. करेक्ट. कैंसिलेशन इज अ बिग प्रॉब्लम. प्राइसिंग इज अ बिग प्रॉब्लम. डायनामिक. एक जर्नी जो एक जर्नी जो 150 रुपए की है, इन अ डिफरेंट आवर, वही मेरे को 250 की चार्ज करते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड व्हाटएवर डायनामिक प्राइसिंग. सर एक और इशू है, जब बैठते हैं तब प्राइस कुछ हो जाता है, लेकिन डेस्टिनेशन पहुंचने में प्राइस बढ़ जाते हैं. हाँ, करेक्ट. द एस्टिमेशन एंड एक्चुअल डजंट मैच. करेक्ट. सर कुछ ड्राइवर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अर्निंग भी करते हैं, तो बोलते हैं कि उन्हें मिलेगा, मुझे तो मेरा शेयर मिलेगा ही नहीं, तो काम कीजिए, आप उसे कैंसिल कर दीजिए, आप मुझे अपना शेयर दे दीजिए. हाँ. तो while a lot of things are working for Uber, there are a lot of problems. तो उन्होंने ये स्टडी किया, उबर ड्राइवर से बात की, पैसेंजर से बात की, उनको लगा कि कुछ प्लसेस और कुछ माइनसेस हैं. Then they went and talked to, are we familiar with Blue Smart? Yes sir. Anyone? आपने यूज किया है? Yes sir. क्या यूएसपी क्या है उनका? Sir, electric. 100% इलेक्ट्रिक है, राइट? And they are the pioneers. But they are not asset light. They own the cars and the drivers are the employees. ये ब्लू स्मार्ट ने इन्वेस्टमेंट की है. उन्होंने फंडिंग भी की है, बट नॉट एज मच एज Uber. And for full disclosure, I've also invested in Blue Smart. It's a great company, but of course, it has its own challenges. One of the best things about Blue Smart, किसी ने Blue Smart यूज किया और have they ever cancelled on you? बताइए मुझे. कभी हुआ ऐसा? So I don't use. By the way, never with me. Zero cancellation. In fact, if I book a cab for 5 o'clock, at 4:40, the cab shows up. So I'm really impressed with their on time and their commitment. And it has nothing to do with the app. Maybe the app is also easier to use. So the point I'm making, friends, let's step back. ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम एक नई कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं जो बुकिंग करेगी. वो तो अभी फिलहाल 4-व्हीलर की बात कर रहे हैं. And to do that, we have analyzed at least 2 competitors. There are many others. Ola, वो भी करने पड़ेंगे. Until you do this exercise, Yash, वो question का आंसर आपको नहीं मिलेगा. कि why should a customer come to you and not go to Ola, not go to Uber, not go to Blue? ये जब आप एनालिसिस करेंगे, यू विल कम आउट, अरे इन बाकी सब में ना, लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी सबका प्राइसिंग जो है ना इस रेंज का है, हम में से 20% डिस्काउंट पे ऑफर करते हैं, मे बी. और ये से बाकी सबकी गाड़ियां और एवरेज क्वालिटी, हम हाई एंड गाड़ियां लगाएंगे. वी ओनली टारगेट पीपल जो थोड़ा शोशा करना चाहते हैं. नो स्मॉल कार्स, ओनली बिग मीडियम टू बिग कार्स. They'll pay the premium and it's a show off value. Maybe we'll become the Apple of this space. Maybe. So you don't get an idea of how your product is going to be different by sitting in a room. You have to do it by being out in the market, looking at competition and talking to customers. Because if you do that, then you can build a business
which is strong. क्योंकि जैसे आप आज Uber या Ola को अटैक कर रहे हैं, you're a new company, tomorrow somebody else will attack you. Right? Startups आपके साथ खत्म नहीं हो जाएंगे ना. आप जो भी कर रहे हो आज लाइफ में, जो भी ऐप है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सोल्यूशन है, आई गारंटी यू आपके लॉन्च करने के 6 महीने कोई और लॉन्च कर देगा. कई बार टाइमिंग ऐसे होती है, कई बार they literally will copy your idea and implement it their way. So it's very important to think from day one, how will you protect your business? Moat का concept समझते हैं हम लोग? What is a moat? तो बताएगा what is a moat? English word है. Sir, like gaining advantage over competitions, like मतलब how company makes its advantage over जो भी उसके competitors हैं and उसको long term तक कर सकती है. बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला. शिवांश, आपने इंग्लिश टर्म में क्या है? What is a moat in general in life? दिखता है मैं कहीं पे? Has anybody been to Red Fort? Yes. अब नहीं दिखेगा, बट रेड फोर्ट के आसपास एक नाला होता था जिसमें पानी और शायद मगरमच्छ भी होते थे, ताकि somebody attacks, they can't cross over it. It becomes harder to attack your palace or city or whatever. So this is from the Middle Ages, the idea of a moat that protects you. वही सेम कॉन्सेप्ट है. शिवाज, आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही थी. ओरिजिन इसका ये है. थोड़ा एग्जांपल लेते हैं. You see 5 brands, 5 companies on the left. Everybody builds their moat very differently. Different strategies. Which of these 5 उनका मोट, उनका ब्रांड है, इतना सॉलिड ब्रांड है that people just want to continue going to them? Apple. Which one? Apple. Perfect. I would say privacy for Apple. Private. Okay, Apple is good. Solid on the brand building. Solid, solid. Which of So these? Sorry, आप क्या बोल रहे थे? So for SE we have Google search engine. We have Google own हाँ brand. नहीं, वो भी अच्छा brand. No, they're all great brand. All of these are great brand, by the way. But a company that constantly invests little more than the others on brand building and aspiration value, Apple. ये कौन है? Instagram. Correct? Any social network is like that, right? जितने friends के आएंगे, friends के friends आएंगे, friends के friends के friends आएंगे, उतना product आपका well trained हो जाएगा. Now you're tracking this controversy about, of course, India's banned it. Controversy about TikTok in the US. Are you tracking it? Yes, sir. US government wants to ban TikTok. And a lot of people are, of course, TikTok is protesting, Chinese company, but a lot of people are protesting. Apparently, over 100 million people are using it and making money off it. So they're saying, "Arey, you're taking away our livelihood." It has gotten so well entrenched through this network effect. Companies that create IPR, intellectual property, innovations, inventions. I mean, most companies here don't do it, but there's one particular company that is well known for it. Which one of these 5? If you heard of GSK, it's a pharmaceutical company. They have created patents on a lot of medicines that they've created through research, and they make money by making sure the patent is protected and they can charge more for their formulations. One mode is for you to have such a huge operation that you're able to buy products at less price and sell also at less price. Walmart or company? Apple. Or Walmart or हाँ, Amazon. Walmart and Amazon. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. Walmart ने तो मास्टर किया था मॉडल, आज नहीं. They mastered this model 20 years ago. Data is your moat. The kind of data, quality of data, quantity of data, and data sets, nobody can match. इस लिस्ट में कौन है? Google. Google, right? The kind of data Google has, nobody else can claim to have. So that's their advantage.
So please think again, don't boil the ocean. Think of one or two things that stand out for you to build your, how will you protect your territory from others? So we discussed competition with two lens. We said who are they, उनको study करते, तो सामने वाला हम अपने आप को कैसे protect करते. Both are important views. Okay, we're going to change gears. We'll talk about revenue model. Can somebody define that for me? The revenue model होता क्या है? Anyone? Model by which company will gain its revenue. Ah, तो थोड़ा तो आपने you reworded what I've written. थोड़ा और explain करिए. How will a company make money? How will they make money? कोई एक आध example याद आ रहा है आपको? Revenue model का? Sir, like Instagram and Google makes money from ads, Very brand good. sponsorships. Very good. आपको simple और even simpler example लेता हूँ. आपका किराना स्टोर जो है local घर के पास, उसका revenue model क्या है? सर किसी चीज के साथ कुछ छोटी चीज फ्री कर देना. Okay, could be. And maybe like if we are buying something of 25 or 30 and he would not be having the change or something, so he would be कुछ और giving दे देगा. yeah. हाँ. ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्कीम है, बट फंडामेंटल मॉडल क्या किराना वाले का? अगर Direct आपको sales 1 to किलो customer. शुगर बेच रहा, हाँ, Direct Margin on sales each to product. customer. डायरेक्ट सेल कर रहा है. सॉरी, एक और वर्ड था, क्या था? Margin on each product. मार्जिन ऑन ईच प्रोजेक्ट. बहुत सिंपल उनका मॉडल है. 80 रुपए की चीज लूंगा, 100 में बेच दूंगा. आप 100 के साथ डिस्काउंट भी कर सकते हो, जैसे सौरभ ने बोला, 100 के साथ एक 1% फ्री भी कर सकते हो अगर आपको प्रमोट करना है. बट बेसिक रेवेन्यू मॉडल उसका है मार्कअप का. 80 की चीज वो कभी कभी 70 में भी बेच देता है. Why? Why does Kirana wala give very deep discount sometimes? Think about it. To build a user base. Build a user Customer base. acquisition. Perfect. Customer acquisition, word of mouth, build a base. Third, if the shelf life of the product is bad, उसको पता है कि 10 दिन में खराब होने वाला है, निकाल दो कम से कम. वो जीरो हो जाएगा 10 दिन में. तो 10 रुपए लॉस ले लो as opposed to 80 rupees loss. Let's look at some examples. तो आपने बिल्कुल ठीक बोला. This is how you generate income. Could be any one of many kinds of models. There are over 2 dozen models out there. We'll look at a few. Subscription based. Can you think of some companies that do this? Netflix. Netflix. Healthify Classic. Me. Sorry, Netflix classic था. और क्या था? Healthify Me. Hotstar. Healthify Me. Hotstar. Correct. Spotify, Spotify. Cult Fit. Cultfit. आपकी Sir, regular a question. physical. हाँ, बोलिए. We talked about modes. So, sir, what is Uber's mode? Excellent question. Actually, मैं आपका question थोड़ा reframe करता हूँ. What was Uber's mode when they came, let's say, in India 8-10 years ago? Guess करिए. आपको hint देता हूँ. At that point, was there Ola? No, sir. No. Was there Blue Smart? No. What was their mode? First mover advantage. Thank you. Perfect. They were offering something nobody was doing. अरे हमने सोचा, आप, you guys are too young to know this, but I've grown up in times that, you know, really you not only was there no काली पीली taxi, you could not rely on it. Phone करो आते थे, नहीं आते थे. Book करो तब भी नहीं आते थे. So first mover was their mode then. What do you think is the mode today that Blue Smart doesn't have? Asset light. So, एक वो है, good point. एक और है, सोचिए. हिंट देता हूं आपको. अगर कोई कोरियर करना हो पैकेज, व्हाट डू यू से? कैन यू एक्स ब्लैंक इट टू मी? व्हाट डू यू से? व्हाट इज द वर्ड इज FedEx. यूज्ड? The speed FedEx. post. हाँ, एक्चुअली फेडेक्स और स्पीड पोस्ट भी चलेगा. तो फेडेक्स एक्चुअली कंपनी का नाम है, बट इतना वो कॉमन यूज हो गया कि वो ब्रांड बन गया है. उबर हैज Porter. हाँ, उबर हैज बिकम अ ब्रांड. दैट्स देयर मोड. अगर आपको आज, इफ यू हैव टू टेक अ कैब, योर पेरेंट्स विल आस्क यू, okay, tell me when you sit in Uber. They don't know whether you're sitting in Uber or Ola or X or Y or Z. The moment you sit in Uber, send me your link.
So Uber's mode today is its scale. It's present in so many countries. Wherever you go, there's an Uber, and its brand. And its asset light continues from day one. But good question. And these modes change with time and more people coming in. So I'll give you an example. When Blue Smart came, right? It's now 6 years ago. Its biggest mode was it was electric EV, the first electric. So a lot of people who are environmentally conscious said, I will not go to Uber Ola. I will do only Blue Smart. Today, that mode is no longer there because all other companies have introduced green vehicles, which is why they are changing. They're saying, okay, सब लोग अगर green हो जाएंगे, eventually the whole world is EV. We don't stand out. Everybody is the same. So they've said, okay, maybe service is what we can provide. You know, good pricing, good service, on time, all that stuff. But good question. Modes do vary. So subscription, the lots of examples you've given, including, by the way, आपने जो mention किया your neighborhood physical gym. Yeah, I'm saying it's not just digital. Gyms also have subscriptions, right? Monthly, yearly, and all that. So lots of very common examples you talked about. Premium. What does it mean? What is freemium model? So try for free, then use the premium. Perfect. For more advanced features. Perfect. Lots of examples. Can you name? So LinkedIn. Yes. What Example Spotify. Spotify भी है बिल्कुल. Zomato भी है. Hold on. Zomato में freemium है क्या? I mean, I don't have to buy Zomato. Freemium meaning the Zomato Gold, right? Gold is it, yes. But if I don't buy Gold, do I have access to the same restaurants ki kam restaurants? No, sir. The discounts that you would be getting on some of the restaurants would be much higher. So that is it. Okay. Okay. वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग. वो Zomato का इंटरेस्टिंग मॉडल है. Okay. What else? Premium model. Most of our tools we use today have this option. Very common these days. Marketplace. We are not selling anything. हम buyer को एक तरफ से ला रहे हैं, seller को एक तरफ ला रहे हैं, बोले अच्छा आप लोग बात कर लो, transact कर लो. Facebook Marketplace, Very good. India We were Mart. India Mart. We were just discussing अभी गाड़ी वाला Uber. They have a driver, they have a passenger. Now driver को on करते हैं, passengers को on करते हैं. They provide an app through which they connect. So groceries. Groceries, बिल्कुल सही. Instagram marketplace, correct. Grocery में BB now है. Amazon is a classic marketplace. The pioneer. Fiverr is a marketplace for talent. Are we familiar with Fiverr? Yes, a 5 and Upwork. And Upwork. Now, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, I strongly recommend that students understand what they do. It's a great model on how to make money, no matter what you do. You may be a student, you may be a graduate, you may have 30 years of experience. But you can leverage this platform, which is very skill-based hiring, gig-based hiring, really, that goes on. Very powerful. Companies that make money based on advertising. Can you name some? Make money from advertising. Which is the classical example दीजिए जरा. पुराने old industry. ने old industry बताइए. ऐसे Newspapers. Facebook, YouTube ठीक बोला आपने. Old बताइए. Older channels. Newspapers. Thank you. Classical newspaper है और TV. अब ad free हो जाता है, but ad वाला भी TV था. Radio. आप गाड़ी में गाने सुनते हैं. It's all ad based. Are you paying to the radio station? You have 30 channels in your car. Are you paying anything to listen to the radio, by the way? No. Zero you pay. Advertisers are covering your cost. You know how much it takes? I forget the exact number, but I'll give you the ratio. If a newspaper sells for 5 rupees, do you know how much it costs to print that newspaper? Do you want to guess? More than 5. How much more? Guess करिए.
The double. More than that, 15 to 20 rupees. बट आप किसी को बोलिए 20 रुपए का न्यूज़पेपर खरीदो, नहीं खरीदेगा. तो वे why do these newspaper companies, at least some of the ones in India, still making money? Because they're charging advertisers a lot of money. They're saying, hey advertiser, आप हमारे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करिए, we have a large base. लार्ज बेस क्यों है? क्योंकि 5 रुपए में बेच रहे हैं. वो 20 कर देंगे, आधे लोग बंद कर देंगे सब्सक्रिप्शन. So they give you something almost for free, but they charge others. Google does it, no? Do we pay Google? No. Google charges advertisers. And transactional हमने बात की. You make money on each transaction. 80 की 100 रुपए मिली. Or what Razorpay does is if you transact through them worth 1,000 rupees, they'll take 2% and that's their commission for transaction fees. So folks, the point I want to make, okay, let me ask you this. There are many revenue models in every business. You have to figure out which ones you work. Chances are you won't have 10, 20 revenue models that work for you. So 1, 2, 3, 4 is fairly normal. So you tell me, हम Zomato की बात कर रहे थे. Zomato, चलो Amazon की बात करते हैं. Amazon.com. Which revenue model does it have? Transaction तो ही है सामने. What else? They have other models. Subscription, marketplace. Subscription meaning what? What do they sell? Amazon Prime membership. Thank you. So they make money every time you buy something from a seller. They make money on Prime and Marketplace. वो तो है ही, they making money, no? Transaction level, marketplace पे आने के लिए. Ads. Ads. Thank you. So मैंने आपको जो 5-6 बताए, Amazon actually has 3 models running for them. By the way, so does Zomato. Zomato makes money on every order. They make money by selling you gold, and they make money by having restaurants advertise on the app. So where does data come in between? For example, like Cred also makes money by selling its data to advertisers. Correct. तो वही Google मॉडल है ना. देखिए जरा, अब Google has to build a large base of users. अगर आप searches नहीं करेंगे, what does Google do? It is analyzing the data. If you are Ajay, you are searching for a watch or a pen or a phone or a car, it has that data. After lots of data points बहुत ज़्यादा हैं, then say okay, ये searches बार-बार आ रही हैं. Maybe he's thinking वही कभी Volkswagen देख रहा है, कभी वो Skoda देख रहा है. Maybe he's interested in a car. Let me show him the car का ad. And if I click, they make some money on it. So Cred का model है that so they are having people sign up and they're offering, credit card or other financial services for free, but their data is gold mine for people who want to sell to them. There may be others who want to sell credit cards, mutual funds, or even cars. Because they have the data. They know every month you're paying a credit card bill of 50,000 rupees or 5,000 rupees or 5 lakh rupees. If you're paying a credit card of 5 lakhs, they know, array, let's promote some international vacations to this person. Let's promote BMW. Let's promote diamonds, whatever, or high-end laptops. So they actually get access to not just customer data, हमने segments की बात की थी, many segments of data. Now, honestly, is the model profitable? I don't know yet. Which means you're offering so many services for free, and the data, if you're offering services that is costing you, let's say 100 rupees, because you have to have servers and data and software and customer service and app, let's say cost you 100. You get a lot of data, but the data is valued only 50, 30, 40, then you're at a loss. And in general, let me share with you, the cost of data is dropping. Because data thoda commoditized ho gaya. Access to data has become better. So people don't want to pay so much for data only anymore. Which is why I hardly see startups who say my business model, core revenue model is advertising. Very hard to sustain. Think about it. The influences है ना आपके Instagram वगैरह वगैरह.
Do you know how many followers you need to make a decent money as an influencer? Do you want to guess? Decent money, not even great money. Example देता हूँ. If you want to earn 1 lakh a month being an influencer, guess how many followers you need? 100,000, 50,000. More. For making 1 lakh a month. 10,000. More. 10 तक कुछ नहीं है. अरे 10-15 तो मेरे यार. I don't get that kind of money. So million followers, maybe. Million, tens of millions. 10, 20, 30 million होंगे तो maybe for all your following and promotion and data and ad जो वहाँ पे run करते हैं, maybe you'll earn about 1 lakh a month. Not that easy. ये आसान होता था पहले. 10,000 followers is a lot of money today. It's not. You have to think hard. Okay, हम gears change करते हैं थोड़ी. ये word GTM बार बार आता है. Do you know what that stands for? GTM? Go to market. Okay, thank you. Well done. And what does it mean? So the strategy by which companies or startups plan, like how will they enter the market? Very good, Shivant. Well stated. So, is it equal to marketing? Is it equal to sale? What is the go-to in this term? Sir, I think so. Like marketing के उस perspective से है, because go to market is कि पहले presence तो बनानी पड़ेगी उन्हें market में अपनी, and sales तो फिर ही आएगी. करेक्ट. और जो हमने अभी तक हमने बात की, अगर आपको ये नहीं पता आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, हाउ डिफरेंट यू आर, व्हाट इज द बेनिफिट यू प्रोवाइड, हाउ डू यू स्टैंड आउट फ्रॉम कंपटीशन, you will have to spend so much more time and money to go to the market. तो वो होमवर्क था जो अभी तक बात कर रहे थे. चलिए बताइए. आई टेल यू वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल्स particularly with technology startups is GTM. You want to guess why? Guess करना चाहेंगे? So maybe because they spend on, मतलब कि early earning शुरू हो जाए. Spend. दोबारा बोलिए शिवांश, समझ नहीं आया मुझे. Like sir, जैसे स्टार्टअप्स हैं, उनको अपनी अर्ली अर्निंग करनी होती है. Like, जैसे अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया तो उन्हें चाहिए कि हाँ, if we have developed, so we earn through that थोड़ा जल्दी. So this can be a reason. अच्छा, तो they in a hurry to recover the cost की जल्दी जल्दी बिके तो जल्दी जल्दी चले. So often they make wrong decisions. Okay. As a technologist सोचिए, as an engineer सोचिए, मैं आपको बोलूँ मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है, कैसा लगेगा आपको? Social media. What does that mean, Ashwini? Social media मतलब आपने ठीक बोला है. What does that mean? Sir, to market products, customer मतलब validation चाहिए होगी. हाँ, but problem क्या है? Startups को इतना difficult क्यों लगता है? It's not rocket science. It is scientific. It's a scientific process. Okay, I'll tell you my two favorite reasons. Number one, most technical people, engineers, don't like this whole idea of sales and marketing. उनको पसंद नहीं है, उनको hesitation है. Either they don't like the term or they don't have the confidence or they've told themselves मैं कभी salesman नहीं बन सकता और salesperson नहीं बन सकता. Number one, it is your own mindset कि मैं product हूँ, मैं से create कर लो, I can't sell. Two, question आपने बोला. When I ask so many startups, what is your go-to-market strategy? Whether we'll do Instagram, done. Or maybe LinkedIn, done. Social media is one of your GTM strategies. An important piece, आज की डेट में आप सर्वाइव नहीं कर सकते, वो 5, 10, 20% होगा जरूर आपका GTM, cannot be 100% GTM. And also often, ये जो budget का issue है ना, often people spend so much on product development and testing, they don't have money left to do proper GTM. So please, folks, when somebody says GTM, say, please, please, please do talk about social media that's relevant. And you're right. Sometimes TikTok is more relevant than Insta, is more relevant than LinkedIn, is more relevant than Facebook.
but do mention other things. What are those other things? We'll talk about. So here's, and GTM can get very confusing. There's so many things people talk about. I'll share with you a very simple tool. You take any startup and within 10, 20, 30 minutes, create your first GTM plan. First. Okay. Here's what it is. And we will take the example of something we've been talking about. Zomato. We're all familiar. So please, I want you guys, everybody to participate. I'm going to show you the piece, explain, and you have to guess how Zomato does it. We'll go one by one. Number one thing in GTM is to know who your customer is. Who are you targeting? Remember, हमने बात की थी segmentation की, persona की. Don't make it for everybody, make it for well-defined people. So, Zomato का customer कौन है? बहुत सारे हैं, but एक segment बताइए. सर हम जैसे लेट नाइट स्टूडेंट्स. Late night students, one segment, very good. और बताइए. People who live alone, like People who live alone, don't want to Corporate cook. employees. Corporate employees, very good. Working professionals who are busy, right? Or homemakers who want a break. There's so many segments, and they actually brand it differently. हम एक के साथ लेके चलते हैं आगे. अभी हम broad लेके बात कर रहे हैं. Urban people who are in this college and few years of working, who want to explore new kinds of foods. शुरुआत आपने उससे की, अपने कस्टमर से की है. Go to marketing. Who is your customer? फिलहाल this is the customer. The next thing you have to do is define who is the competition. We discussed direct, indirect. तो थोड़ा competitors बताइए. Zomato के direct and indirect दोनों बताइए. direct Swiggy, Thank you. Eat sure. indirect food vendors, like Food vendors, very good. And Restaurants. home cooking and eating in restaurants. All of these are competitors. बिल्कुल ठीक बोला आपने. Lots of competitors. Your marketing has to think about all these. And not only look at competitors, also see how they are promoting. What is their marketing strategy? Swiggy ऐसा क्या magic कर रहा है Instagram में जो Zomato नहीं कर रहा है, right? You have to analyze it. Then you have to say, जो यश ने शुरू में question पूछा था, what is our value proposition? How do we stand out? So how does Zomato stand out? आपको क्या लगता है? Zomato के क्या है? Moats क्या है? Differentiation क्या है? बताइए. Its initial mode was first mover, but now they're competitors. आज की डेट में Zomato की एडवांटेज क्या है? As a customer बताइए. So more Yeah. offers. More offers, okay, that's good. So better pricing and offers. So they try to notify by mingling into the people's real life, like interactive notifications mostly to make orders. Notification I think रास्ता जैसे order delivery वाला जो notification है, right? वो? नहीं सर, ऐसे आता है ना कि आज हो गए बोर. Oh, okay, वैसे- good one, वैसे good one. Good. How interesting notification that connect with the customer. Very good. Yes. And chances are, by the way, this is where data comes in. They have the data Yeah. to know what have you been ordering. उसी हिसाब से ऐड आ रही है. अगर आप स्वीट डिशेस ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको ऐड आएगी, आज ऐसा क्या मीठा खाया जाए, काइंड ऑफ. अगर आप बहुत लार्ज ऑर्डर्स कर रहे हो, तीनों के आप पार्टी वार्टी ज्यादा करते हो, तो आज पार्टी का क्या मूड है, कस्टमाइजिंग इट. ठीक बोला आपने. एंड ऑफ कोर्स, हाँ, उससे कनेक्टेड है ये. आप बताइए जब लेफ्ट और राइट में क्या फर्क है? The old iPod. What is the difference between the left side of the screen and right side? Okay, somebody who has not spoken. What is on the left? Features. Product Specification. description. Specification. Very good word. Product description. Right पे क्या है? Advantage. Advantage and how it makes you feel.
सॉरी बोलिए। लाइक इसमें मतलब जो पिक्चर है इसमें हमें ये भी बता रखा है कि इससे हमें क्या बेनिफिट्स होंगे। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। आपको कैसा लगे? मुझे लग रहा है मैं जहां भी जाऊंगा सारे गाने मेरे साथ जा सकते हैं। दिस सो गुड। ये बताइए लेफ्ट और राइट में क्या फर्क है? ये प्रोडक्ट है शैम्पू। लेफ्ट में क्या है? Left में they are trying to build their trust through ingredients they have. करेक्ट कि we are using organic और we are using natural things. आपको करेक्ट side effects नहीं होगा. बिल्कुल सही है। और And राइट right में now they're selling सेलिंग aspiration. एस्पिरेशन, बेनिफिट। देखिए कितना इमोशनल चीजें बोल रहे हैं ये। शाइनी हेयर, फील गुड, फील ब्यूटीफुल। आपने कभी ध्यान दिया? और इमोशनल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें लगता है कि हम डिसीजंस एनालिटिकल लेते हैं खरीदने से, वी एक्चुअली डोंट एज ह्यूमन बीइंग्स। आप ध्यान दीजिएगा कितनी एड्स आप देखते हैं ऑनलाइन या टीवी पे, जिसमें या पपीज होंगे या छोटे बच्चे होंगे, because they're trying to Lot. evoke those emotions in you and get to the emotional benefit of whatever they're trying to do. Okay, so Zomato is saying, okay, functionally हम आपको choices देते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की वगैरह वगैरह। We will also give you peace of mind कि जो आप ऑर्डर करोगे या 30 मिनट बोला तो 30 मिनट में आ जाएगा। तो उनका मोड आज की डेट में उनका नेटवर्क है, बहुत सॉलिड नेटवर्क है। बाय द वे आई डोंट यूज स्विगी दैट मच। इज स्विगी, which are in your experience, which are better network, better choices, Swiggy or Zomato? Zomato. Okay. Others? Sir, but sometimes Swiggy's price is a little better sometimes. Sometimes they have deals, right? Better deals. एक Yeah. और होता था ना, टाइनी आउल होता था। Rates. कौन सा? टाइनी आउल होता था, right? Swiggy has the dining feature. Has the dine-in feature as well, correct? That helps. Also, the Swiggy app has Instamart, which is like the 10-minute order. fast like groceries, but like Zomato has Blinkit. So Yes. Yes. Good points. Good points. So both trying to build their own modes differently, sometimes end up copying the other. Good points. But also कई बार ना, we as customers we also have inertia कि या मैं जोमेटो यूज का आदत होगी मेरे जोमेटो की, या इट विल टेक हार्डली टेक 20 सेकंड टू स्विच टू स्विगी, इट्स ओके, लेट मी जस्ट स्टे विद वन। स्विचिंग कॉस्ट समटाइम विल होल्ड अस बैक। आउटरीच चैनल्स क्या हैं जोमेटो के? देखिए कितने सारे हैं। जोमेटो इज वेरी गुड अबाउट दिस बाय द वे। दे आर ऑल ओवर द प्लेस। अभी यू टॉक्ड अबाउट पुश नोटिफिकेशन, मोबाइल ऐप में आती है, सोशल मीडिया में दे आर वेरी एक्टिव, ट्रेडिशनल मीडिया में दे वेरी एक्टिव, दे हैव इन्फ्लुएंसर, दे हैव शेफ्स, दे हैव इवेंट्स दैट दे डू, रियली रियली आउट देयर। अगर आप ध्यान देंगे इसमें सोशल मीडिया एक चैनल है पूरी लिस्ट में, देखिए आप। डू वी अंडरस्टैंड द अदर टर्म्स? क्विक पूछते हैं, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डू वी नो क्या होता है? yes, sir. यस, Using specific good. keywords to optimize searches. वेरी गुड। एंड हु डज ऑप्टिमाइज फॉर whom? For customers. Make it no. Optimize for the search engine. So Google has given certain restrictions and requirements that if you want me to crawl your page and index you, you must have ta 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 ta. And if ये Google ने पब्लिश किया हुआ है, H1 टैग होना चाहिए, इनबाउंड लिंक्स होने चाहिए, आउटबाउंड लिंक्स होने चाहिए, रिपीट ऑफ वर्ड नहीं होना चाहिए, चल गाइडलाइंस। तो आप वेबसाइट बनाएंगे तो अगर इफ यू फॉलो द गाइडलाइंस, गूगल विल रैंक यू हायर इन सर्चेस। पीपीसी क्या है? एनीवन? Related to online searches? Pay per एक आप गेस करिए। थैंक यू। इजी वर्ड नो। आपने ऐड डाली है, so Google will not charge you for showing the ad. Then Zomato puts an ad to you and you open a website, the ad shows on the side, right? You're not.
The old model of Google was ad दिखा दी पैसे दे दो. Now they're saying unless somebody clicks on the ad, so pay to make sure they only charge the advertisers when people click and go someplace. Now, obviously, this is a very dynamic pricing. You have to actually bid for these rates. They change very often. Sales and support. अरे आप go to market नहीं सोच सकते till you say, okay, how will I? Selling is one part, but how will I support? How will you provide customer service? How will I solve problems? Right? मेरा order नहीं आया, late आया, ठंडा आया, गलत आया. It's so frustrating when you don't have anybody to resolve it. That resolution could be a person, could be chatbot, doesn't matter. But I need the problem solved. There's so many apps you use. By the way, has anybody ever tried reaching customer service on Amazon? Any experience? So Yes, sir. कैसा था experience बताइए? So anybody else was trying to speak, I will speak afterwards. Like, Okay, तो विशाल आप बोलिए. सर नहीं, मैं बाद में बोलूंगा, कोई और बोलना चाहता था पहले. अच्छा ठीक, अश्विन आप बोलिए. हाँ सर अश्विन, what is your? हाँ सर ब्रदर को लेना था एक्चुअली, कोई माउस या फिर ईयरपीस था, सो ही एक्चुअली कंप्लेंट अबाउट दैट एंड they change it immediately, and sometimes good they even, experience. yeah, very good, really good. Did you talk or did you chat? Chat. Chat. Okay, thank you. विशाल आपका experience? सर अच्छा नहीं था सर. सर बिकॉज मेरे को क्या था, मैं जब शिफ्ट हुआ था घर वापस, तो एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू अवेल द अमेजिंग कुरियर सर्विस. सो आई जस्ट वांटेड टू कुरियर माय मैट्रेस ओवर द हाउस. बट उनका क्या था, दे वर नॉट रेडी टू टेक द मैट्रेस. आई वाज ट्राइंग टू शिफ्ट माय मैट्रेस टू माय कजन्स हाउस. ठीक है, लेने वाली पार्टी भी रेडी है, भेजने वाली पार्टी भी रेडी है, बट एसीएस नॉट एक्सेप्टिंग द कुरियर. सो मुझे फिर अपना मैट्रेस वहीं छोड़ के आना पड़ा. सर लावारिस ऐसे ही पड़ा था. सर लाइक मैंने कितनी बार कॉल किए, कितनी बार कंप्लेन की, दे वर नॉट लिसनिंग. दे आर सेइंग कि नहीं भैया हम नहीं ले सकते, कल को डैमेज हो जाएगा तो आप तो हमें रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे. बोले भाई जब मेरे को दिक्कत नहीं है, सामने वाली पार्टी को लेने को दिक्कत नहीं है, तो व्हाई आर यू हेसिटेटिंग इन टेकिंग दैट? बट दे डिडंट टेक दैट. आई डोंट नो व्हाई. No, but these are the stories, by the way. This is what is connected to customer service. Now, guys, you want to guess when somebody is happy with the service, like a Zomato, how many people do you tell? And if you're unhappy, how many people do you tell? Do you know there's some numbers on this? Scientific studies की गई हैं इसके ऊपर. If you're happy with the service, कितने लोगों को बताते हो आप? अरे आज बड़ा मजा आया Zomato पे ऑर्डर करके. Nobody. और अगर Zomato messes up your order, कितने लोगों को बताओगे? सबको. So there's actually numbers. If you're happy, on an average, you will tell 1.2 people. If you're unhappy, you will tell on an average 3.5 people. ये data है, real data है. तो companies कहती हैं हमें bad experience नहीं देना, which is why this investment in customer support and sales has to be part of your GTM. आप लोगों ने बहुत अच्छे examples दिए. Zomato, you may not remember it, 5-6 years ago, had pathetic customer service. अगर ऑर्डर गड़बड़ होगी तो भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला. आप लगे रहो फोन पे वेट करने के लिए. They've improved dramatically. Uber used to have great service, it has dropped. Amazon had okay service, but now I'm hearing a lot of people say mixed reviews के drop हो रही है. People often say मुझे तो ये भी नहीं पता था how to get service. It's very hidden menu. बहुत मुश्किल से मिलता है. So companies fortune sometimes change with the service provider or don't provide. Revenue models हमने बात की है. Zomato के 3 revenue model हैं, right? Commission, gold, advertising. And discounts वगैरह ऑफर करते हैं वो लोग. And you know, Zomato doesn't do it ad hoc. जो आपने बात की, festivals है, कोई events है, Mother's Day है, they have these special promotions running all the time. आती है हमारी very important term actually sales and marketing में. I don't want to get into too much of it. KPI नाम सुना है आपने? Key performance indicators.
चलो आपको एक दो चीजें दिखाता हूँ, गेस करिए। अगर कोई आपको बोले कि अरे मेरा जीटीएम स्ट्रांग है, मेरे 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं, आई हैव 400,000 फॉलोअर्स, इज दैट गुड न्यूज और बैड न्यूज? सो स्केलिंग तो अच्छी है, लाइक डाउनलोड स्केलिंग ट्रस्ट सी, इफ दे हैव डाउनलोड स्केलिंग तो सर डेफिनेटली कुछ तो ट्रस्ट आ वहां सर यूजर्स का भी। ओके, तो मैं आपको एक और डेटा देता हूँ। जैसे हमारे 10 लाख डाउनलोड हैं, and of these 10 lakh, within 48 hours, 8 lakh people have uninstalled the app. अब क्या बोलोगे आप? तो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कांट से। हाँ, so you can't say. आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं बट कोई कुछ नहीं कर रहा, वो आपकी बुराई कर रहे हैं। आई डोंट नो। सो इसको हम लोग बोलते हैं वैनिटी मेट्रिक्स। मतलब सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, बॉस इतने डाउनलोड हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, बट आर दे वर्किंग फॉर योर बिजनेस? यू डोंट नो। उसके लिए आपको प्रोसेस या आउटकम मेजर चाहिए, जिसमें रियली 10 लाख डाउनलोड थे, 9 लाख आर स्टिल इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल करने के बाद भी दिन में वो 10 मिनट यूज करते हैं, यूज भी करते हैं तो 100 रुपए का ऑर्डर प्लेस करते हैं। दैट इज रियल वैल्यू। जस्ट सेइंग 10,000 पीपल हैव जोमेटो ऐप इज नथिंग। कितना यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। ऐप खोलने के बावजूद भी आपकी एवरेज ऑर्डर 50 रुपए है, इट मीन समथिंग। दैट मीन यू रनिंग लिटिल, बट अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1,000 रुपीज है, यू रनिंग मोर एज जोमेटो। तो बी केयरफुल of any metrics you use and see. Be smart about asking next question. So what? So what? What does it mean for business? Don't get enamored. इस पे बहुत हवा फैलती है आजकल वैनिटी मेट्रिक्स पे। प्लीज आस्क रियल क्वेश्चंस। एंड कस्टमर एक्सपीरियंस की हमने बात की, विच इज अबाउट keeping customers delighted, happy, engaged, and all of that. And of course, Zomato also has a lot of partners, delivery, influencers, all of those. Sir, I have a question actually. हाँ बिल्कुल, Sorry to interrupt. no problem. Sir, like अभी latest not I guess I'm not like मेरे को number याद नहीं है, but around 2-3 weeks पहले there was a initiative by Zomato कि we will make a veg अलग, veg delivery service अलग करेंगे, non veg या जो है बाकी common अलग करेंगे. So is it a feature which will be liked or which will be promote something जो society को backfire कर सकता है ना? क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना सिर्फ वेज फैमिलीज में जो वेज नॉन वेज होटल्स में नहीं खाते, स्पेशली बीइंग अ जैन फ्रॉम अ जैन फैमिली, वी आल्सो हैव दैट मेंटालिटी कि भाई नॉन वेज होटल है, वेज होटल है, दोनों एक ही जगह है, दोनों एक ही जगह बन रहा है, तो मैं वहां से क्यों ऑर्डर करूं? तो सर Correct. उसमें ये फीचर जोमेटो को ऐड ऑन होगा या उसके मतलब उसके इतने बड़े इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किए को बैकफायर भी कर सकता है? ऐसे फीचर्स का क्या है? नहीं, गुड पॉइंट। देखिए, अगर जोमेटो जैसी कंपनी विच इज रियली स्मार्ट एंड प्रोग्रेसिव कंपनी, राइट, if they're offering to add some new features, it is basis their experience in the market. They're listening to the customer. जब ये सामने आप देखिए, कस्टमर एक्सपीरियंस है, सर्विस है, रेटिंग्स है, वो सुन रहे हैं लोग क्या मांग रहे हैं। उनको ये भी मालूम है इंडिया जैसी कंट्री में ये नवरात्रा, देन ये फास्टिंग और वो फास्टिंग, बहुत ऐसी चीजें आती हैं जिसमें लोग बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स खाते हैं। So they might be sensing a business opportunity. The only thing I will add, I'm not a vegetarian, but I have a lot of vegetarian friends. They don't order for Zomato, not because Zomato एक ही बैग में ला रहा है, राइट। मेरी दाल ला रहा है और किसी का चिकन ला रहा है, मेरे को अनकंफर्टेबल फील होता है। एक ये है। दूसरा, उनका कंसर्न ये है कि जिस होटल से आ रहा है उसमें सेम बर्तन यूज कर रहे हैं कि नहीं। So exactly सेम वही. सेम होटल दाल भी बेच रहा है और चिकन भी, यू डोंट नो सेम कढ़ाई है। सो इफ जोमेटो इज रियली सॉल्व, आई डोंट नो व्हाट दे डूइंग, ओके, ये मेरा गैस है। अगर मैं जोमेटो हूं, मैं बोलूंगा मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा कुकिंग की एंड डिलीवरी की। सिर्फ एक सॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कस्टमर की, जो कस्टमर के दिमाग में क्वेश्चन है, जी कीड़ा है लोगों के दिमाग में। दैट्स व्हाट आई वुड डू। बट सर दे डिड देयर टेस्टिंग फॉर दैट एंड वो उनका कैंपेन अभी फेल हुआ था, लाइक दे रिपोर्टेड। फेल क्यों हो गया बाय द वे, डिड दे रिपोर्ट? सर उसका जो अभी जो ऑनलाइन पे प्रेजेंट यही है कि लाइक कस्टमर्स ने बोला कि
जो सर ने भी बोला कि सोसाइटी डिवाइड हो रही है लाइक वेज नॉन वेज में, बिकॉज जो कस्टमर बेस है वो इन जनरल ज्यादा बड़ा इन कंपैरिजन टू वेजिटेरियंस वगैरह। तो दिस वाज द पॉसिबली रीजंस। नहीं, पॉसिबली देखिए, अगर कोई कैंपेन फेल भी होता है, कुछ हो सकता है फंडामेंटल इश्यूज हो उसमें, चाहे आपने मार्केट की नई नीड या डिमांड नहीं पड़ी है। दूसरा, हाउ यू पोजिशन द कैंपेन ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट, राइट? थोड़ी उसकी मैसेजिंग करनी पड़ती है, नहीं तो इट कैन गो द रॉन्ग वे। आपको बहुत क्लासिक एग्जाम्पल बताता हूँ। नैनो किसी को याद है गाड़ी? यस सर। डेफिनेटली सर, सबसे क्या कहानी इकोनॉमिकल फैमिली गाड़ी थी सर। की? और इतनी पुरानी कहानी नहीं बता रहे हम लोग, अभी हम ये 50 साल पुरानी सर कहानी, ये 8-10 साल वाली पुरानी ऑफ है। कोर्स लास्ट डिकेड की बात है सर। हाँ, 8-10 साल में। तो इतनी ज्यादा उन्होंने कैंपेनिंग की नैनो की, सब 1 लाख कार बोलते थे उसको। फेल क्यों हुई पता है आपको? गाड़ी में प्रॉब्लम थी, शुरू में थी, गाड़ियां जल रही थी, बट बाद में दे फिक्स्ड इट। गाड़ी में बाद में गाड़ी बिकेम ओके। गेस गेस करिए क्या प्रॉब्लम रही होगी? बिकॉज दे पिच्ड देयर प्रोडक्ट एज चीपेस्ट कार्स, तो वो थैंक कस्टमर्स यू। के माइंड में एक होगा था कि व्हाई डू वी परचेज द चीपेस्ट। हाँ, गाड़ी में इवेंचुअली प्रॉब्लम नहीं थी। टाटा का ब्रांड है यार, सॉलिड, छोटी गाड़ी है सिटीज के लिए। उन्होंने काफी इनोवेशन की डिजाइन में, इंजन पीछे था। बट जो खरीदने वाला कहता है भाई मेरे ड्राइवर में खड़ी होगी ना, लोग कहेंगे क्या ले लिया, इससे अच्छा स्कूटर ही ठीक था। सर इसका स्कूटी का तो रिप्लेसमेंट था ही सर हाँ, कि बट करेक्ट, बट पीपल डिडंट वांट टू फील गुड। सी, इंडियन सोसाइटी में गाड़ी लेना इज अ बिग डील। अब लोग कहते हैं गाड़ी भी ले लो, नेबर्स करें अच्छा भाई साहब क्या ले लिया आपने, क्या ही ले लिया, कहते no point. So the social pressure of owning a cheap car got to Nano. Not the car, not the price, not the brand Tata. देखिए आप, तो अब जो जोमेटो का एग्जाम्पल है, देखना पड़ेगा क्यों फेल हुआ। उसमें प्राइसिंग इशू था, कैंपेन इशू था, मेंटल इशू था, आई डोंट नो, देयर सो मेनी थिंग्स। गुड क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस गाइस। सो फोक्स, आपको वी आर मीटिंग ऑन थर्सडे, राइट? सौरभ, विशाल, वी मीटिंग थर्सडे, राइट? यस सर, थर्सडे को ही है सर। Yes, sir. Yes, sir. We are meeting on Thursday. तो आपको ये भेज दिया जाएगा सैंपल विद अ ब्लैंक शीट। आई वुड लाइक फॉर यू टू, वेयर एवर यू स्टार्ट विद आइडिया स्टेज में, कोई बात नहीं, बेसिक कंपटीशन एनालिसिस एंड बेसिक गो टू मार्केट रेवेन्यू मॉडल सोच के आपको सबको ये भरना है। सिंपल, आई एम नॉट आस्किंग फॉर वर्ड फाइल विद सो मच इंफॉर्मेशन। सिंपल, एक एक दो दो तीन तीन बुलेट फॉर ईच ऑफ दीज, सोच के आइए जरा। इट बी ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड डोंट वरी, ये इटरेट होता है, चेंज होता है। तो आपका जीटीएम plan approach can, with the way it looks today, I guarantee you it will look different in 3 months. So can also people fill this who haven't really participated till now? Yes, Ashwin, yeah, applies to you. आप आइए थर्सडे लेके अपना प्रेजेंट करिए, हम फीडबैक देंगे। Sure. And by the way, there are some teams who did present last Saturday. Other teams wanted to present but we didn't have time, तो उनके लिए भी we'll create an opportunity. Thursday is your day to pitch your startup, your idea, GTM So we have marked competitions. them. Sorry? Sir, our team has marked their name, जो Very good. करना चाहते थे बट कर नहीं पाए थे। हाँ, So कितने we'll लोग give हैं them a ऐसे? chance at priority. कितने लोग हैं ऐसे में विशाल? सर 2 लोग थे सर, शिवांश तो था ही अपने साथ जो बैठा है अभी। शिवांश बिकॉज ही वाज ट्रैवलिंग दैट टाइम, एंड एक और टीम थी, आई नीड टू रिकॉल ठीक इट। है, थर्सडे तक ठीक है, बता दूंगा सर मैं आपको। ठीक है। And Ashwin is also volunteering. ठीक है, It आप was दो, me. okay, very good. Kanak, thank you. Yes. So good, you guys present whatever you wanted to present last week. Plus, on top of that, if you want to bring your GTM, happy to listen, happy to give feedback. Sure, sir. It will help you in general to get clarity on your idea. Plus, in this program itself, as you get selected, it will help you in the pitching. Yes, Okay. sir. We are approaching the end of our session. I'm happy to take questions and comments, but एक छोटी quiz भी करते हैं हम लोग, एक और. In its earliest days, what did Amazon do or sell? Sell books.
and only books. Do you know this? Yes. When Amazon was launched, उनकी tagline पता है क्या थी? By the way, why did you choose Amazon as a brand? घर की दुकान, like the timeline I'm talking about, sir. I'm not sure. वो राइम कर गया. अच्छा, Amazon घर की दुकान आपकी है दुकान, पर वो अभी recent है और इंडिया है. पर 20 साल पहले जब Amazon.com launch हुआ था, why did you choose That I'm not Amazon aware of, sir. as a domain name? Sir, on the biggest, the river के लिए ऐसा कुछ. You're on the right track. What is so special about Amazon? It is the biggest river in the world. Thank you. So, उनकी tagline थी the world's largest bookstore. Amazon ऐसे launch हुआ. They did books for many years and then started adding on धीरे-धीरे करके. You want to guess early days में YouTube कैसे launch हुआ था? क्यों launch हुआ था? The video songs. वो तो आज भी है, थोड़ा different था. I think, sir, online dating something related. Bang Yes, on. ये लॉन्च हुआ था ये. देन अब बहुत सारे लोगों ने अपना कंटेंट डालना शुरू किया था. देन उन्होंने आगे जाके तब यूट्यूब बनाया था. तो आपके you bang on. Who said dating? Shitakshi? Yes, Yeah. Satakshi. Okay, so imagine online dating थी ये 20 साल पहले, 15 साल पहले. And then they changed their lives. You can do upload videos and do a lot many more things with it. By the way, हम लोग जो let me ask you a similar name. Amex, what do they do today? American Express. What do they do? Cards, credit cards, financial product, right? You know when they started, what business they were in? Asset management, sir. Nothing to do Investment with banking. nothing to do with money. Hint. So अभी तो ये लोग asset management कर रहे हैं. अभी तो asset management, financial advisory, credit cards, investment ये सब करते हैं. But when they launch, hint उनका नाम है. न्यूज़पेपर बेचते थे. न्यूज़पेपर बेचते थे. चलो फाइनेंस से तो आगे गए. न्यूज़पेपर नहीं बेचते थे. और सोचिए. Travel, cargo, something like Like shipment. FedEx. Yeah, like Federal Express, there was American Express. They did cargo and courier. They're the world's first. They became so big, people were sending Picasso paintings through them from US to Europe, let's say. Important thing was people felt कि ये बहुत reliable लोग हैं. उन दिनों, imagine 100 years ago, packages गुम नहीं हो, ship से जा रहे थे, कोई internet नहीं था, कोई tracking नहीं थी. जो पैकेट भेजे हुए मिल जाएगा, सब सही सलामत है. They're so reliable that people, when they said, okay, will you give us your money and we'll invest and manage? They said, of course. And they said, that's a more lucrative business, managing money instead of being a courier. So they stopped that service. You know where it is today. Early days of Twitter. Twitter was started to do what? microblogging. Even before that, microblogging actually was next stage, उससे पहले. No idea. Hint, when Twitter launched, it had a character limit on messages. Hint, when आप लोगों के टाइम से पहले का है, जब एसएमएस फर्स्ट आए थे सेल फोन पे, they had a character limit. Do you know that? Messaging service. So Twitter said, just like SMS आ रहा है फोन पे, but for that you need a plan, mobile carrier plan, I will offer SMS service using data or Wi-Fi. That is what Twitter started with. SMS, Wi-Fi based SMSs, and then of course big microblogging, social media, Elon Musk, Trump, वो सब हो गया उसके बाद. Early days of Netflix. क्या करते थे ये लोग? So सीडीज बेचते थे पहले नेटफ्लिक्स. लाइक सीडीज से स्टार्ट किया था.
सीडी मतलब बेचते थे, क्या करते थे? Did they sell them? No? Okay, CDs आंसर सही है, but what did they do with the CDs? Anybody else? They rented it. हाँ, and you know कैसे होता था? आप वेबसाइट पे जाइए, सीडी बुक करिए, कोरियर से सीडी आती थी नेक्स्ट डे, आपको 3 दिन मिलते थे देखने के लिए, चौथे दिन आप बंदा आता था कलेक्ट करने के लिए। तो फिजिकल सीडीज, डीवीडीज आर गोइंग बैक एंड फोर्थ बिफोर इंटरनेट केम। So CD डैमेज हो जाए फिर 100% डैमेज होती थी। I used to get CDs जो प्ले नहीं होती थी, I used to send back CDs, वहां से कंप्लेन आती थी आपने स्क्रैच करके भेजा है, फिर लड़ाई करो। By the way, Reliance copied this model in India, didn't work. उनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम था, कुछ something Flix. I used to subscribe. Anyway, Flipkart, early days. So ये भी Also बुक स्टोरी था सर। बुक स्टोरी था, तो उन्होंने बेसिकली Amazon को कॉपी किया था, बट एक बहुत बढ़िया चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। कैस करेंगे वो क्या है? शिपमेंट। Imagine India, again, you were too young. Imagine India 10 years ago. आज तो सब e-commerce करते हैं. Imagine India 10 years ago. People didn't want to do e-commerce. You know why? You want to guess? कैश ऑन डिलीवरी। हाँ, cash on delivery was a solution. The problem ये थी, लोग कहते अरे this is crazy. Are you saying I have to give 1,000 rupees to somebody without touching what I'm getting and wait for 3 days and then get the product? I'm not crazy. लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि ऑनलाइन किसी को पैसा दोगे, वो पैसे की अच्छी चीज आएगी तो अच्छी क्वालिटी आएगी। They did not trust. Hence, Flipkart said, okay, don't pay now. When you get the product, see it, like it, pay for it. Remarkable innovation. Otherwise, by and large, they copied Amazon. Okay, so the story here, friends, I'm going to summarize a little bit, is that as you work on your idea, number one thing to keep in mind is think from your customer's perspective. उनकी क्या need है, क्या requirement है, वो feature क्या मांगते हैं, price क्या मांगते हैं, quality क्या मांगते हैं. If you can think like a customer, you solved half of the problems. 2, always try to evaluate who else might be doing similar things today or may start doing similar things tomorrow. वो आपका competition है. Competition से डरने का नहीं है, सीखने का है हमेशा. There's something they're doing that you can learn from. If you have 4 competitors, सबसे एक चीज भी सीख लोगे आप, good for you. Third key message: there are many ways to make money in today's environment, especially in digital world. हमने बात की subscription की, premium की. There are many ways to make money. Explore what works for you. Last but not the least, जितनी एनर्जी आप प्रोडक्ट में डालते हैं, उतनी ही शायद ज्यादा उससे आपको जीटी में डालनी है. Then the world will know who you are, what you make, how good you are. Otherwise, घर बैठे बैठे किसी को नहीं पता लगेगा. आपकी 2 social media posts a week से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. I'm sorry, I'm being blunt. You have to do a lot more. And that's why you need a strategic approach towards GTM. With that, I'll stop and invite questions or comments. And if there are no question or comment, I know you have padhai on your mind. I want to wish you the best. Any Sir, question, एक Vishal? question. हाँ, Yes, sir. Vishal. सर मैंने ये रखा था सर कि अगर एनीथिंग इज डिजाइन मीटिंग टू द टाइम नीड्स, जैसा टाइम आता है वैसी चीजें डेवलप भी होती है, तो वो खराब कैसे हुई सर? कांट वी से कि ऑप्टिमिस्टिकली दे आर आउटडेटेड rather than directly commenting negatively on them, because वो नेगेटिवली कमेंट करना उस टाइम के लोगों के एफर्ट्स पे पानी फेरना. जैसे एग्जांपल दीजिए. जैसे कुछ चीज़ आउटडेट, अब जिससे फ़ोन ही आउटडेट हो जाता है. हम जब स्कूल लाइफ में थे तो बच्चे जो एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते थे, सैमसंग S2 था, छोटा-सा फ़ोन आता था. वो उस टाइम चीज़ों का बहुत क्रेज़ था ना सर. क्रेज़ एंड उस हिसाब से चीज़ें डेवलप होती थी, उस हिसाब से चीज़ें मार्केट में आती थी. खैर वो आउटडेटेड हो गई, बट एंड उसी के लेके एंड्रॉइड आज इतना डेवलप कर गया सर. बट चीज़ें जो उस टाइम डेवलप हुई थी और आज डेवलप हुई है, उसके कंपैरिजन में उसको खराब बोल देना
ज्यादा सही है या उसको आउटडेटेड बोलना ज्यादा सही है? देखिए, दो पहलू हैं। अगर आप उस पॉइंट पे होते तो आपके लिए वो इनोवेशन थी, यस सर। राइट? इंडिया में मारुति 800 चलती थी, वो जब वो आई वो भी बड़ी रेवोल्यूशन थी, बट उन्होंने लॉन्च की मारुति ने एस्टीम, किसी को याद ही नहीं होगा, विच वाज अ सेडान। अरे इतनी उसकी मारा मारी, ब्यूटीफुल कार, इट वाज इन दोस डेज ब्यूटीफुल कार। आज अगर आप देखो आप कहोगे डब्बा है। तो अब कहाँ पे हैं? उस समय वो इनोवेशन थी, प्राइस भी बहुत अच्छा था, लुक भी बहुत अच्छी थी, लोग लाइन लगा के खरीदते थे। लुकिंग बैक, आई डोंट नो उसको बुराई करना सही है, बट लुकिंग बैक यू कैन से दैट प्रोडक्ट विल नॉट फिट वेल इन टुडेज नीड्स। वो सही है बोलना, बुराई नहीं कर रहे हैं, वो रियलिटी है। इतना बड़ा सेल फोन, मेरा पहला सेल फोन इतना बड़ा था, आज फिट नहीं करेगा मेरे लाइफस्टाइल में। उस समय बहुत बड़ी था, आज नहीं है। आज हम बोल रहे हैं एआई, chat gpt is becoming part of our lives, so cool, it's making our lives easier, homework, assignment, research. 5 years later जब chat gpt बॉस हो गए, हम अरे वो that was so trivial, no, वो क्या था वो? ये नेचुरल एवोल्यूशन है। इन्वेंशन इनोवेशन आते रहेंगे, राइट? हम इतनी बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, फ्रॉम इन्वेंशन ऑफ द व्हील टू फायर टू फैक्ट्रीज, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बट सर टुडे इट्स नॉट अ बिग डील, इट वाज अ बिग डील देन। So context decides whether it is innovative or not. And looking back, we can only learn. जैसे हम नैनो की हमने बात की, कितना सीखा हमने नैनो से, what to do, what not to do tomorrow when you launch your next car. You can only learn from them, right? Good, bad, I'm not going. It didn't work, it didn't work. So my question will be sound कि ये ज्यादा इमोशनली अटैच था, बट लाइक हो सकता है, नहीं हो सकता है अटैच्ड हो, और बुरा भी लगता है कई बार। when you talk to people, अब बीच में I don't know if you noticed, पेपर मैगजीन्स ऑलमोस्ट गायब हो गई हैं, बहुत कम बुक स्टॉल पे दिखती हैं। आई टॉक टू पीपल वो मच ओल्डर, कहते हैं अरे हमें वो संडे को मैगजीन आती थी, फिल्म फेयर जो भी नाम बोलते हैं वो आनी बंद हो गई है। अरे इट इज सो सैड, दे आर सैड, दे मिसिंग इट, बट उसकी मार्केट नहीं है, क्या करेगा पब्लिशर? ही डजंट मेक मनी, तो ही स्टॉप्ड इट। ओके, थैंक यू। Okay, thank you folks, all the best for your exams. Study hard, work hard, also give a little bit time to your project so we can have some interesting conversations on Thursday. Thank you, Saurav, Vishal, for organizing it, Thank and you I'll so see you much, soon. sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. everyone. Thank Thank you, you sir. for the Thank you. team. If you can just maybe scan this thing and give us your valuable feedback for the same. Yeah, and hope to see you with the tasks, which will be sharing it with you in the like maybe by tomorrow, so that in the coming workshop we can discuss, and maybe like some of you might get a chance to pitch as well. So yeah, kindly be ready with the same. And to the teams who have not submitted their final task assignment on the portal, by 12 a.m. today, it is the last deadline for you. After this, we won't be entertaining any further assignments or submissions for evaluation purpose and shortlisting the teams to the next stage. So kindly do the needful, and all the best. Yeah. And Thank you. Thank you. Saurabh, I Yeah. want to add Yes. Yes. something. Yes. 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 Uh, Vishal, please. While you're uploading the file, guys, do ensure that you're checking that status bar. That's more crucial because we don't get the file if we don't, mark the status as complete. मतलब आप efforts भी करोगे तो भी आपका efforts goes in vain. Not goes in vain exactly, but वो completion status नहीं आता है फिर आपका. I hope it's done, Saurabh. Can anyone take part who hasn't taken part till now? From now on. I guess that won't be possible, Ashwan, because like we started with the learning track phase earlier. But if you have your portal login or something, maybe still you can complete your application. We can consider it for a wildcard kind of a entry or something. So if that works for you, and if you have any difficulty or something, you can just reach out to me. Like I'll be there to help you out with it. Okay, how to reach out? So you can just note my email ID and my number as well if you want.
Yes, please. Just a second.